Hello all, welcome to Creative Taanushree channel. Today we will see another example of assignment function and we will try to solve the DG capacity using CalC solver. So let's start. So today's aim was to get the capacity of the generators. What is our aim? हमारा उद्देश्य क्या है? We need to buy 4 generator sets G1, G2, G3, G4 for the factory. Factory machine loads are M1, M2, M3, M4, M5 and M5, M6 and B. And it is and its associated models of operations are specified in the table below. Our aim is to identify the minimum capacity of the generator meeting all conditions. हमारा उद्देश्य क्या है कि हमें 4 जनरेटर्स खरीदने हैं 4 जनरेटर्स का खरीदने हैं जिसका जनरेटर्स का नाम है G1, G2, G3, G4 फैक्ट्री के लिए। और हमारे फैक्ट्री में मशीन लोड्स है M1, M2, M3, M4, M5, M6 एंड B। तो ये लोड्स है, ये 7 लोड्स है। इनका एसोसिएटेड जो टेबल है कि कैसे ऑपरेशन किया हुआ है वो नीचे दिया हुआ है, हम आगे जाके देखेंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि हमें एक जनरेटर कैपेसिटी निकालना है जो कि मतलब मिनिमम कैपेसिटी हो और ये ऑपरेशनल कंडीशंस को, मोड ऑफ ऑपरेशंस को फुलफिल कर सके। सो नेक्स्ट स्लाइड। सो हमारे इनपुट ऐसे ही है। मशीन वन को M1 डिक्लेयर किया गया है और उनका कैपेसिटी है 37 किलोवाट। मशीन 2 है M2 52 किलोवाट। मशीन 3 है M3 27 किलोवाट। बिल्डिंग है B 15 किलोवाट। मशीन 4 है 32 किलोवाट M4। मशीन 5 M5 है और 15 किलोवाट। मशीन 6 55 किलोवाट M6। ये है इनपुट पैरामीटर्स जो किलोवाट में स्पेसिफाई किया है। मशीन का लोड्स कितना है। अच्छा, ऑपरेटिंग कंडीशंस कैसा है कि M1, M2, M3, M4, M5, M6 प्लस B, मतलब सभी मशीन्स प्लस बिल्डिंग का लोड, ठीक है, वो क्या है, शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू G1, G2, G3, G4। मतलब जो टोटल सम ऑफ जनरेटर्स है, चारों जनरेटर्स है, और टोटल जो कैपेसिटी होगा वो ये हमारा मशीन लोड से ज़्यादा भी हो सकता है या इक्वल हो सकता है। ये है पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन है मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4 प्लस बिल्डिंग। ये जो 5 लोड्स है उसका जो लोड का टोटल लोड होगा वो जनरेटर 1, जनरेटर 2 और जनरेटर 3 से कम होने चाहिए, ठीक है। थर्ड कंडीशन है मशीन 1, मशीन 3, मशीन 5 और बिल्डिंग का लोड है वो जनरेटर 1 और जनरेटर 3 से इक्वल या कम होने चाहिए। सो M1 मशीन 1, machine 3 and machine 5 and building load should be less than or equals to the sum of generator 1 and generator 3. Third condition है machine 2, machine 4, machine 6 plus building is equals to or less than generator 2 plus generator 4, means दो जनरेटर का टोटल सम होगा उससे कम या इक्वल्स टू होना चाहिए। मशीन 1 प्लस मशीन 2 प्लस मशीन 3 प्लस मशीन 4 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू जनरेटर 1 प्लस जनरेटर 2। मशीन 4 प्लस मशीन 5 प्लस मशीन 6 प्लस B शुड बी लेस देन इक्वल्स टू जनरेटर 3 प्लस जनरेटर 4। मशीन 2 प्लस मशीन 6 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू जनरेटर 1। Machine 1 plus machine 2, the total sum of loads of machine 1 and machine 2 should be less than equals to generator 2. The sum load of machine 3 and machine 5 should be less than generator 3. The sum load of
machine 4 and machine 6 should be less than or equals to generator 4. Okay, now there is a declaration. What is the declaration is, this is a simple problem which can be done manually. The idea here is to understand and implement the solver options available in CalC. So our this is a simple example to understand what solver can help do and how to use it. In real life situations, the generator capacity is determined by load calculations, where you specify diversity factors, utility factors and other things. तो ये जो है ये एक सिंपल प्रॉब्लम है, ठीक है, और इनको इसको मैनुअली भी सॉल्व किया जा सकता है, बट हम इसलिए ये एग्जांपल लिए है ताकि हम जान सके कि कैल्सी में सॉल्वर ऑप्शन जो है वो किस तरह से यूज़ किया जाता है. और रियल मतलब जो एक्चुअल में क्या होता है, जनरेटर का कैपेसिटी जो होता है वो लोड एनालिसिस से किया जाता है, जहाँ पे डाइवर्सिटी फैक्टर्स, लोड यूटिलिटी फैक्टर्स ये सब स्पेसिफाई होते हैं और बेस्ड ऑन दोज कैलकुलेशंस जनरेटर का कैपेसिटी डिटरमिन किया जाता है. दिस इज अ सिंपल एग्जांपल, इट हैज़ नथिंग टू डू विद एनी कोरिलेशंस और एनीथिंग. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट थिंग इज वी कॉपी द टेबल. हम टेबल को कॉपी करेंगे पहले. कॉपी, पेस्ट. ओके, सो हमने टेबल को कॉपी किया. सेकेंड थिंग इज हमने कंडीशंस को भी कॉपी करेंगे. कॉपी द कंडीशंस and we will paste it. Where to paste it? We paste it here only. Let's see what happens. Okay, for ease we will do some formatting here for ease of visualization. ओके, सो ये तो आगे निकल गया. ओके, सो दैट्स इट. नाउ विल स्टार्ट. सो कंडीशंस वी विल स्पेसिफाई एज generator 1 G1 in this column, in this cell, G2 in this cell, G3 in this cell and G4 in this cell. So we will highlight this in yellow. Okay, what is our target? Our target is minimum, so we have to get the minimum value. So what we will do is we will do sum of all these generators. So this should be minimum. We will highlight it in another color. Now what are our conditions? Okay, so what are our conditions are, first is M1 plus M2 plus M3 plus M4 plus M5 plus M6 equals to M1 plus M2 plus M3 plus M4 plus M5 plus M6 plus B. So this is just 233 should be less than equals to what? All four generators equals to this plus generator 1 plus generator 2 plus generator 3 plus generator 4. Okay, so first line is complete. Put some color, lighter side, maybe this. Okay, now we second conditions equals to
machine 1 M1 plus machine 2 plus machine 3 plus machine 4 plus building should be less than equals to generator 1 plus generator 2 plus generator 3. The second condition is met. So we will also highlight this. Third condition is equals to machine 1 plus machine 3, this is 3, plus machine 5 plus building should be less than equals to generator 1 plus generator 3 equals to generator 1 plus generator 3. Okay, so this condition is also met. ये condition भी हो गया. Now equals to M2 machine 2 plus M4 plus M6 plus building should be less than equals to G2 plus G4, G2 plus G4. Just to check again this thing. This is third M1, M3, M5, B. Okay, that's correct. So this is done. See, fourth point equals to M1 plus M2 plus M3 plus B should be less than equals to generator 1 plus generator 2. So this is done. Equals to M4 plus M5 plus M6 plus B less than equals to generator 3 plus generator 4. This condition is also done. Now equals to M2 plus M6 should be less than equals to G1. ठीक है, this is done. ये हो गया. M1 machine 1 equals to machine 1 plus machine 2 should be less than or equals to generator 2. Okay, so second condition is, and this is met. Third, which one serial number is 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ninth. So ninth is equals to M3 plus M5 should be less than equals to G3. M4
plus m6 would be less than equals to yeah. So our conditions are complete. So how many conditions we have that? Let us check. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 all conditions are met. So we have to vary this cells. Condition is minimum this one, and out conditions are this. Let us do one simple example. Let us write 5 5 here, 6 here. Formulas are working. 7 8. Okay, so it is working. Formulas are working. So now we will ask solver. हम solver को बोलेंगे भाई आप हमें solve करके दो. So let us start. We will go to tools. हम tools में जाएंगे, वहाँ पे solver का option है, तो we will click on this. Now target cell. What is our target cell? Now this is our target cell. It has to be minimum. So target cell, this is to be minimum. By changing cells, by changing these cells. Okay. What is the conditions? Conditions are 1. This should be less than or equals to this. Conditions 1. Second conditions, this cannot be negative. Generator negative में नहीं होता है. Generator capacity, so greater than equals to 0. And third, this should be integer. So solve. So it has solved in 3 seconds, 3.0 seconds. Okay, keep result. So what is our result coming? So our generator 1 is 107 kilowatt, our generator 2 is 89 kilowatt, our generator 3 is 42 kilowatt, and generator 4 is 87 kilowatt. So if we have this, you see all these conditions are made. 233 is less than 325. Okay, 163 is less than 238, 94 is less than 149. So all these conditions has been met. See, 49, 107. Okay, so these are the governing things. So it has come to this. So these results are this. So thanks all. Please give your comment below if you have any comments. If you like the video, do like, share, subscribe our channel. You can also follow us on Instagram and Facebook. Link is in mention below. Thanks. Bye bye.